now in the form of ordered pairs. Now how to check it in the form of ordered pairs? तो देखो ordered pair में क्या खास बात है, सारे एलिमेंट्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो फर्स्ट एलिमेंट में आने चाहिए, ठीक है? तो whatever will be the second elements will be called range. तो 2, 4 and 9 will be called range, ठीक है ना? कोडोमेन यहाँ पे लिखा होता है, रेंज है ना, डोमेन यहाँ पे लिखी होती है. Got it? Very simple. Done. Now here the most common form of representation is you will find functions in mathematical expression. अब तुम देखो यहाँ पे मैंने दो सिनेरियोस दिए हुए है ना. Just by modifying the codomain I can change the nature of function to a relation. देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो मैंने फंक्शन है x स्क्वायर, लेकिन इनपुट डाल रहा हूँ -1 0 1. If I put -1 as input, this will become 1 0. तो ये मैपिंग will look something like this. There is no issue. Now I have changed from real number to natural number. हुआ क्या, जब मैंने आउटपुट आंसर तो सेम ही आया जो पहले आ रहे थे, बट अब मैं जब 0 डालूंगा तो यहाँ पे मैप करने के लिए, बिकॉज दिस इज नेचुरल नंबर, देयर इज नो 0 हियर, so I cannot map this 0. So what is important to know here is कि domain and codomain if modified, ठीक है ना, function could be turned into not function या relation. फंक्शन का नेचर चेंज हो सकता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बस मैं एक चीज और बताऊंगा, एक्स स्क्वायर देखो, अब बेसिकली एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा दिखाई देता है. तो अगर अनदर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज टू ग्राफ्स, ऐसा दिखाई देगा ग्राफ. नाउ हाउ टू फाइंड डोमेन एंड पहले हाउ टू चेक वेदर गिवन ग्राफ इज अ फंक्शन और नॉट. सो वी हैव अ टेस्ट दैट इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन टेस्ट. हमने कैसे लाइन ड्रॉ करी, इफ दिस लाइन कट्स द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट अ फंक्शन. If it does not, if just cuts at 1 point or 0 point, it is a function. देखो this is the function because it is maximum cutting at 1 point only. So y is equal to x square is a function. अब देखो y is equal to x square लिख लिया तो this becomes a parabola हम draw भी कर सकते. Next is basically how to find the domain. For domain you can have, ये मैंने खुद बनाया हुआ थोड़ा सा concept है, that is nothing but have a bulb test. If I put 2 bulbs on ऊपर और नीचे, the shadow that we will form on the x axis, तो देखो शैडो ऐसे फॉर्म होगी, तो जो x axis पे शैडो फॉर्म होगी that shadow is called domain, ठीक है ना. if I change the orientation of the bulb here, और फिर मैं देखूं कि y axis पे क्या इमेज फॉर्म होगी, शैडो फॉर्म होगी, तो देखो y axis पे ये फॉर्म होगी. तो जो y axis पे शैडो फॉर्म हो रही है that is called range, और जो x axis के ऊपर शैडो फॉर्म हो रही है that is called domain. Got it? Simple idea है ना, but very elegant way. If you know a graph of any function, तो अब आप उसकी domain और range निकाल सकते हो, no problem with that. Just apply 2 bulbs here. आप पहले bulb लगा रहे हैं, लेकिन बाद में आप फिर psychologically कर सकते हो. And you don't need to apply bulb. Here you can clearly see again what is domain and range. Now is this a function or not? It is not a function. If you apply the vertical line test, then you can clearly see. It was animation है. Here it is cutting at 2 points. It is not a function. Vertical line test. This we can skip. Real and real valued functions. So if the domain is real, it is a function of real variable. If the codomain is also real, then it is real valued function. This real valued is used in context of codomain. This is used in context of domain. तो अगर input जो तुम्हारा है that is real, then the function is function of real variables, and whatever output we are generating that is also real, then it is real valued function. Clear यहाँ तक? कोई doubt? अब हम क्यों पढ़ा रहे हैं? Basically because in your syllabus we have only real variable, real valued function of real variable. आपके syllabus के अंदर यही है ना, complex answers, complex inputs we are not dealing with that.